Hello students, welcome to this session. So in this session we are going to start 8 number chapter linear inequations from commerce part 2. Okay, 8 number chapter linear equations. So this is very important chapter as a weightage of 8 marks. Okay. Now first of all definition of linear inequations. What is the inequations? Definition. Statement involving real numbers or two algebraic expressions and symbols greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to is called equality or inequation. Okay, a statement involving numbers or two algebraic expressions. Okay, with symbols greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. So these are called inequality or inequations. So example, 40x plus 20y greater than 200. Okay, so this is a inequations or inequality here symbol. So this is the statement 40x plus 20y and greater than symbol. So same 40x plus 20y greater than equal to 200. Okay, so both examples are same. First example 40x plus 20y greater than 2000 means solution of this equation. अगर इसका solution greater than 200. Okay, so 200 से ज़्यादा उसका वैल्यू. और second equation जो 40x plus 20y greater than equal to 200 means solution of this equation is greater than or equal to 200. So that is the meaning. So this is called as a inequation or inequality. Now there are two types of inequations or inequality. First type strict inequalities. Okay, first type strict inequalities or slack inequalities. Okay, दो टाइप्स है उसके. So first है strict inequalities and slack inequalities. So strict inequalities means क्या? Inequalities involving the symbol greater than or less than are called strict inequalities. Okay, symbols. Okay, expression involving symbols greater than or less than. Just greater than or less than, that is called as a strict inequalities. Okay, expression involving. Example. Now this is first example 40x. Okay, plus 20y greater than 200 or x minus y less than 5 means the expressions involving symbols less than or greater than, that is called as strict inequalities. And second, slack inequalities. Slack inequalities means second number example. Okay, 40x plus 20y greater than equal to 200. Okay, ये symbol क्या indicate कर रहा है? The value of that is solution of that equation is greater than or equal to 200. Okay, greater than or equal means 200 is included in that solution. And first में strict inequality में 200 is not included. Okay, or you can write x minus y less than equal to 5. The expressions or symbols involving greater than equal to or less than equal to symbols. So that is called as slack inequalities. Now next point, representation of solution of linear inequality. Okay, representation of solution. Okay, representation of these solutions on a number line. So हम यहाँ पे exercise solve करेंगे. Exercise 8.1. यहाँ पे exercise 8.1 आप solve कर रहे हैं. First question है, write inequalities that represent interval and state whether the interval bounded or unbounded. Okay, interval bounded or unbounded हमें यहाँ पे आंसर देना है. So first minus 4 to 7/3. Okay, so minus 4 to 7/3 means value minus 4 less than x less than 7/3. So this is square bracket means minus 4 less than equal to x and which is less than equal to 7/3. So this is a bounded interval. Okay, bounded between minus 4 less than equal to x and less than equal to 7/3.
Next, open interval 0, 0.9 और square bracket दिए. So 0 less than x and less than equal to 0.9. Value of x is greater than 0 and less than equal to 0.9. So this is also bounded. Okay, bounded है उसका x का जो वैल्यू 0 to 0.9. 0 to means greater than 0 to 0.9. तो आगे open interval -11 means -11 less than x less than -2. This is also bounded. Okay, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ओपन इंटरवल को, तो अगर इसे आप रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे 0 to 0.9, तो 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पे 0.9 आ रहा है. ओके, so 0 is not included. means यहाँ पे 0, 0.1, 0.2 यहाँ से आपको अगर ये दिक्कत है तो 0.9 और 0.9 को आपको सर्कल करना है. ओके, डार्क सर्कल मीन्स this 0.9 included in that interval, and 0 open interval means 0 is not included in that solution. Okay, -11 bounded. Next, fourth number example 5, 8. Okay, so 5 less than equal to x less than equal to up to infinity means this is unbounded. Okay, right inequalities. Okay, these are the inequalities. Represent interval, state whether the interval bounded or unbounded. So these three intervals are bounded intervals and fourth one is unbounded. Okay, next example, solve inequations. Next, question number 2, solve the inequations. Okay, solve these inequations. First equation 3x minus 36 greater than 0. Okay, so this is the type of strict inequalities or strict inequations. Okay, strict means greater than symbol is there. So 3x minus 36 greater than 0. 3x minus 36 greater than 0. So add 36 on both sides. Add 36 on both sides. Okay, so 3x minus 36 plus 36 greater than 0, 0 plus 36. Okay, so add 36 on both sides. Both sides 36 add करना है. So therefore 3x greater than 36. Okay, minus 36 plus 36 cancel हो रहा है, and x is greater than 12. Okay, तो हमें आंसर मिल रहा है x is greater than 12. This is strict inequalities. Means x values of x or variable value of x is greater than 12 means x belongs to 12 comma infinity. Okay, so not 12. So greater than 12 means x belongs to 12 comma infinity. You can write. Next, 5x plus 7 greater than 4 minus 2x. Okay, 5x plus 7 greater than 4 minus 2x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड और फ्रॉम बोथ साइड. तो यहाँ पे अगर 5x ग्रेटर देन -2x प्लस 4 -7. ओके, दोनों साइड से LHS और RHS से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इस लेफ्ट साइड का +7 -7 कैंसिल हो रहा है और राइट साइड में +4 -7 -3. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप ऐड -2x. ओके, +2x ऑन बोथ साइड. +2x ऐड करो यहाँ पे. 5x plus 2x लेफ्ट साइड में एंड -2x plus 2x कैंसिल -3. ओके, 5 plus 2
7x greater than minus 3. Therefore x greater than minus 3 upon 7. So therefore x belongs to, okay, x is greater than minus 3 by 7, minus 3 by 7 to infinity. Okay, so this is the answer. Okay, so solve inequations. So इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. तो 3x minus 36 greater than 0 means minus 36. Okay, 3x minus 36. तो x के वैल्यूज फाइंड कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, minus 36 को 36 ऐड ऑन बोथ साइड. तो दोनों साइड 36 ऐड करें तो minus 36 plus 36 कैंसिल हो रहा है. ओनली 3x is equal greater than 36. 0 plus 36 तो 36. Therefore x divided by 3 on both side. तो डिवाइड, इस स्टेप को आप क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 3 on both side. तो x is greater than 12 होगा. 36 divided by 3 means 12. So x belongs to, x की values greater than 12 means 12 comma up to infinity. Next 5x plus 7 greater than 4 minus 2x है. तो इसमें आपको क्या करना है, x की values फाइंड करना है. Okay, x values और that is symbol greater than or less than. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड से. तो इस लेफ्ट साइड में जो प्लस 7 अब कैंसिल हो रहा है, राइट साइड में 4 minus 7 minus 3 एंड अगेन प्लस 2 ऐड करना है, प्लस 2x ऐड ऑन बोथ साइड. तो minus 2x कैंसिल हो रहा है, राइट साइड में ओनली minus 3 और लेफ्ट साइड में प्लस 2x. 5x plus 2x 7x. तो x is greater than minus 3 by 7 मिल रहा है. मींस x के जो वैल्यूज है, x belongs to minus 3 by 7 up to infinity because x is greater than minus 3 by 2. So next example, 7x minus 25. Third number example. 7x, okay, 7x minus 25 less than equal to minus 1. Okay, 7x minus 25 less than equal to minus 4. तो क्या करना है, minus 25 है. तो add 25 on both side. तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, minus 25 plus 25 कैंसिल हो रहा है. तो minus 4 add means plus 25. ओके, या इस 25 minus 25 इस साइड में आप राइट साइड में शिफ्ट करें तो plus 25 हो रहा है. ओके, तो therefore 7x less than equal to, okay, 7x less than equal to 25 minus 4 21. So x less than equal to 3. Okay, so x less than equal to 3 means x belongs to, okay, square bracket x belongs to x value less than 3 means infinity to 3. Okay, infinity comma 3. x का वैल्यू जो less than 3 means infinity to 3. Next example, exercise 8.2. Question is solve following inequations graphically in 2-dimensional plane. Okay, so first जो inequations है उसे solve करना है और graphically उसे represent करना है. That is the representation of inequations graphically. So first example, x less than equal to 4, x less than equal to minus 4. Okay, already x less than equal to minus 4 means x belongs to, okay, less than equal to minus 4 means minus infinity up to minus 4. X belongs to minus infinity up to plus 1. So graphically we can represent it. X is equal to minus 4. Origin is x axis, y axis. X is equal to minus 4 and value of x is less than equal to minus 4 means all values on this line belongs to this solution. So this is the solution, this region which is left side of minus 4. So this is graphical representation of this in equations. A graphical representation, x is equal to minus 4 means
माइनस इंफिनिटी टू, यहाँ से माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 तक का जो वैल्यूज है वो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ x। तो नेक्स्ट इक्वेशन 4x plus 5y less than equal to 40। सेकंड 4x plus 5y less than equal to 40। okay, so this is linear inequations in two variables। so 4x plus 5y less than equal to 40, so represent it graphic। तो इस इन इक्वेशंस को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सो फर्स्ट ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन ओ x plus 5y equal to 40 on ग्राफ। ओके, तो 4x plus 5y equal to 40 ये लाइन ड्रॉ करना है फर्स्ट। तो फॉर दैट x फर्स्ट टेक x is equal to 0, तो x is equal to 0, in that case y equal to value right, okay 8। okay, therefore first a point will have x 0 comma 8 when y equal to 0, x is equal to first हमें x और y के अगर वैल्यूज फाइंड करना है तो x का वैल्यू पुट करो 0, तो y equal to 8 मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट होगा 0 comma 8। okay, नेक्स्ट y equal to 0 पुट करो तो x is equal to 10, so b point is 10 comma 0। okay, so 4x plus 5y less than equal to 40 means इसका जो रीजन होगा, okay, the solution is less than equal to 40। okay, 40 is also included in that solution, means first x and y axis 0, x axis y axis, first a point 0 comma 8, x axis 0 y axis 8, ये पॉइंट हो गया 0 comma 8। नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है b 10 comma 0। ओके, तो यहाँ पे b 10 comma 0 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो दिस इज द लाइन 4x plus 5y, ये दोनों पॉइंट आपको कनेक्ट करना है। दिस इज लाइन ऑफ 4x plus 5y equal to 40। ओके, तो 4x plus 5y less than equal to 40 means the region that is solution of this expression is below the 40, means below this line। okay, less than equal to 40 means this is the region। okay, 4x plus 5y less than equal to 40 means दिस इज 4x plus 5y 40 का लाइन है, और जो रीजन होगा वो रीजन शेडेड एरिया इज बिलो द लाइन, शेडेड रीजन इज बिलो द लाइन बिकॉज़ लेस देन इक्वल टू 40। तो नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 8.3, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली और फाइंड द solution of this given equations graphically। so first x minus y less than equal to 0 comma 2x minus y greater than equal to minus 2। okay, so first here draw the lines, हमने draw graph line x minus y equal to 0 and 2x minus y equal to minus 2। okay, draw the graph of lines x minus y equal to 0 and 2x minus y minus 2। so first in equations x minus y less than 0 represents, okay, it represents shaded region। तो shaded region होगा solution set of shaded region is below this line। okay, represent shaded region below line, also below the line and including points on the line, below the line and including points on line। yes, x minus y less than equal to 0,
उसका जो रीजन होगा शेडेड रीजन वो बिलो द लाइन होगा और इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन दैट लाइन मींस लेस देन इक्वल टू जीरो सिंबल. सेम सेकंड इक्वेशन in equation second, okay, second in equation represents shaded region or solution set shaded region above the line including above the line because 2x minus y greater than equal to minus 2 above the line जो shaded region होगा above the line including points on line, okay, including all points on line, okay, including all points on line. So first to draw x minus y equal to 0. So first line x minus y equal to 0 means x minus y equal to 0, it means x is equal to y, okay. So if x is equal to 0, y is equal to also 0, x is equal to 1, y is equal to 1 means अगर आप ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको x axis y axis this is origin, okay. तो x equal to y, x minus y equal to 0, ये लाइन means x is equal to y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 means origin. x is equal to 1, therefore y is equal to 1. x is equal to 2, y is equal to also 2 means so दोनों both that is coordinate of both x and y are same, therefore this line is passing through perfectly through origin, okay. This is the line of x minus y equal to 0, okay, x minus y equal to 0, okay. X is equal to 3, y is equal to also 3, okay. So next to draw line 2x minus y equal to minus 2, okay, 2x minus y equal to minus 2. So put x is equal to 0 in that, x is equal to 0 तो y equal to क्या मिल रहा है, x is equal to 0, y is equal to 2, okay. When y equal to 0 in that case x is equal to minus 1, okay. तो फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है a 0, 2, a 0, 2, 0, 2 यहाँ पे एक a पॉइंट 0, 2. नेक्स्ट पॉइंट b पॉइंट मिल रहा है x minus 1, 0, ओके. तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करो तो y 2 मिल रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है 0, 2, a 0, x 0, y 2 and if y is equal to 0 put करें तो x is equal to minus 1, तो b minus 1, 0 मिल रहा है. तो minus 1 x axis का minus 1 इस साइड पे, तो this is b point. So this line passing through a और b, तो लाइन पासिंग हो रहा है a और b से, okay. So this is the line 2x minus y equal to 2x minus y equal to minus 2, okay. So ये दो लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. So first this first equation x minus y less than equal to 0, x minus y less than equal to 0 represents shaded region below the line including points on the line. Below the line means towards origin and above the line including points, okay. So second जो equation है 2x minus y greater than minus 2. So greater than minus 2 means right side or above the line. So above the line means इस साइड में. ये सॉल्यूशन सेट टोटल पूरा कंप्लीट यहाँ पे मिल रहा है, ओके. ओके means x minus y less than equal to 0 means left side में, इस साइड में इसका सॉल्यूशन सेट ले रहा है, ओके. बिलो द लाइन और 2x minus y greater than equal to minus 2 means the shaded region is above the line. Above the line means right side, means this side, okay. So this is the solution set. This region is the solution set of given inequalities, okay. Next example from same exercise. Next example
सेम एक्सरसाइज 8.3 से सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। ये ग्राफिकली आपको इसका जो सॉल्यूशन सेट है पूरा टोटल 4 इक्वेशंस का वो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 2x + 3y greater than equal to 12 minus x plus y less than equal to 3 x less than equal to 4 y greater than equal to 3. Okay, so first draw graph lines, graph of lines. Okay, इस जो गिवन इक्वेशन है उसके अगर आपको ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना 2x plus 3y equal to 2 minus x plus y equal to 3 and x equal to 4 and y equal to 3. Okay, draw graph lines of 2x plus 3y equal to 12. ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करना है, सेकंड minus x plus y equal to 3, x is equal to 4, y is equal to 3 के लाइंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फर्स्ट ग्राफिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट। ओके, तो फॉर फर्स्ट लाइन 2x plus 3y equal to 12. ओके, फर्स्ट लाइन टू ड्रॉ फर्स्ट लाइन आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट लाइन तो यहाँ पे पुट x is equal to, ओके, फर्स्ट पुट x is equal to 0, therefore y is equal to, x is equal to 0 पुट करो, y is equal to 4 मिल रहा है। ओके, y is equal to 4, therefore फर्स्ट पॉइंट 0, 4 a पॉइंट। ओके, इस लाइन का फर्स्ट एक पॉइंट मिला हमें, ये 0, 4। नेक्स्ट y is equal to 0 पुट करना है। ओके, तो x is equal to y is equal to 0 means x is equal to 6। ओके, सेकंड पॉइंट मिल रहा है 6, 0। ओके, तो ग्राफिकली आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 x axis, y axis. तो फर्स्ट लाइन 2x plus 3y equal to 4 ड्रॉ करना, फर्स्ट a पॉइंट 0, 4, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, तो y कोऑर्डिनेट 4। ओके, तो a पॉइंट यहाँ पे आ रहा है a 0, 4। नेक्स्ट b पॉइंट 6, 0। ओके, तो b पॉइंट 6, 0। This 2x plus 3y equal to 12 in line is point में से पास होंगे। Okay, this is 2x plus 3y equal to 12 line. Okay, next same second line minus x plus y equal to 3. Okay, so when x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 3. So first C point 0, 3. Okay, x is equal to 0, y is equal to 3. When y equal to 0, in that case y equal to 0, x is equal to -3. D point मिल रहा है हमें -3, 0. Means ये line minus x plus y equal to 3. तो दो पॉइंट C और D से पास हो रहे, C पॉइंट मिल रहा है 0, 3, y coordinate 3. Okay, this is y coordinate 3, C point, and next D -3. Okay, -3 means D point. This point C line pass हो रही है। This is minus x plus y equal to 3 line. Okay, तो minus x plus y equal to 3 लाइन 0, 3 और -3, 0 दो लाइन से C पॉइंट और D पॉइंट से पास होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर लाइन x is equal to 4, x is equal to 4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है x is equal to 4। ओके, x is equal to 4 means parallel to y axis. This is x is equal to 4 line. Okay, parallel to y axis. Next y equal to 3, last fourth number line y equal to 3. So y equal to 3 means C points, 3 points. This line यहाँ से पास होने parallel to x axis. Y equal to 3. Y equal to 3 means line parallel to x axis. Okay. Okay.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस हमने ड्रॉ किया है ओके ऑन दिस ग्राफ पेपर. सो फर्स्ट इक्वेशन ओके फर्स्ट इनइक्वालिटी represents shaded region or solution shape above the line. Okay, represents shaded region above the line. Okay, shaded region above the line means 2x plus 3y the line है. So 2x plus 3y this line. Okay, the shaded region is above the line. Okay, opposite to the origin से opposite इसका solution होगा. Next second line minus x plus y less than 3. Okay, so second inequality represent shaded region or solution shape below the line. Below the line means minus x plus 3y. तो इस जो 2x plus 3y इक्वल टू इसके अबव सॉल्यूशन सेट है, सेंटर रीजन इसके अबव और minus x plus y के नीचे means below the line. ओके, तो सॉल्यूशन सेट इस एरिया में मिलेगा. ओके, इस एरिया में सॉल्यूशन सेट मिलेगा बट लेस देन x इक्वल टू 4 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3. बट x लेस देन 4 means left of the line x is equal to 4 के लाइन पे लेफ्ट साइड में और y greater than equal to 3 means above the y equal to 3 line means third inequality. Okay, x less than 4 represents ये क्या represent कर रहा है? Represents shaded region. Okay, x less than equal to 4 represent shaded region left of line x is equal to 4. X is equal to 4 के लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन सेट रीजन लेफ्ट साइड में और फोर्थ जो इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, रिप्रेजेंट्स शेडेड रीजन above the line y equal to 3. Okay, means y less than equal to 3 represents shaded region above this line. Means हमें जो shaded region मिल रहा है तो above this line इस लाइन के ऊपर इस साइड में below this line इस लाइन के नीचे इसमें at left side of x is equal to 4 x is equal to 4 के left side में और above the y equal to 4 means this is the shaded region. Okay, this is the answer. यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है तो 2x plus 3y equals to greater than equal to represents above the region means इसके ऊपर और minus x plus 3y less than equal to 3 below the line shaded region and left side of x is equal to 4 x is equal to 4 के left side में और above the y equal to 3 के लिए above y equal to 3 के लिए. This is the shaded region represented by all these four inequalities. Okay, this simple chapter है, इसको 8 marks weightage है तो very simple chapter. Okay, I hope आपको समझ में आ गया है. Thank you.